Oh, Gana Aya, it's called Juan Diahara by Madan Maddi and Dr. Zeus and Fateh. It's the first song, it's still on YouTube. Very little views, but oh Gana ne TV te paata mainu right off the bat, off of one phone call. I'm on the TV now. मैं हूं इंडिया का सबसे फिल्मी लौंडा, राज जोन्स। मैं हूं इंडिया का सबसे फिल्मी लौंडा राज जोन्स एंड टुडे वी आर इन कॉन्वर्सेशन विद वर्ल्ड फेमस इंडो कैनेडियन रैपर फतेह DOE एंड ही इज वन ऑफ माय सुपर फेवरेट। पाजी कैसे हो, की हाल चाल? सत श्री अकाल, की हाल चाल ਤੁਹਾਡਾ? की हाल चाल है? बहुत बढ़िया पाजी। मतलब व्हाट्स हैपनिंग, पहले मुझे बताओ क्या चल रहा है आजकल? ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਐਲਬਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ, ਹਫਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਟਸ ਜਸਟ soaking in, you know, all the reviews, feedback, the videos, the feedback. ਉਹੀ ਬਸ ਹੁਣ ਉਹਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਆ to just keep releasing videos, yeah, visuals and stuff. That's great. By the way, I loved your album. मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई, स्पेशली म्यूजिक प्रोडक्शन। और यार आपके फ्लो इस बार मतलब कुछ ज्यादा ही खतरनाक थे। Thank you brother, thank you so much man. हाँ, वो तो मतलब जैसे आपने बोला कि यू नो फीडबैक मिल रहा है, लोगों को एल्बम पसंद आ रही है, वीडियोस चेक कर रहे हो, तो मुझे ये बताओ कि उधर कनाडा और बाकी जहां जैसा आपको पता है पूरे वर्ल्ड में हिप हॉप सुन रहे हैं, तो किस तरह का आपको फीडबैक मिल रहा है आपके एल्बम को लेके, मुझे ये जानना है। बहुत ਵਧੀਆ ਮਿਲ ਰਿਹਾ एक्चुअली फीडबैक। एंड सॉरी मैं थोड़ी पंजाबी च बोलूंगा तो मिक्स करूंगा इंग्लिश च, क्योंकि मेरी हिंदी ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ नहीं गी, so hopefully you know ਸਾਰੇ fans ਤੁਹਾਡੇ you know they can understand, but yeah ਮੈਨੂੰ feedback ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ actually, ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, because ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਸਟ 3 albums ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ ਥੋੜੇ ਵੱਖਰੇ ਸੀਗੇ, ਥੋੜੇ ਸੈਂਟੀ ਸੀਗੇ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਮੇਬੀ ਸੈਡ Song ਟਾਈਪ or maybe on the pop type। ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ was ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ all the ਭੰਗੜਾ records, right? so ਆ ਜਿਹੜੀ album ਸੀਗੀ ਮੇਰੇ ਲਈ it was to do something different but then do something hip hop। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹਿਪ ਹੌਪ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਫਾਈਨਲੀ, ਹੈ ਨਾ, ਲਾਈਕ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਮੈਂ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਾਈਨਲੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਤਾਂ ਹਿਪ ਹੌਪ ਇਜ਼ ਬੀਇੰਗ ਨੋਨ ਰਿਸਪੈਕਟਡ, ਕਿੰਨੇ ਆਰਟਿਸਟ ਆ ਰਹੇ ਵਧੀਆ, ਤੇ ਇਟ ਵਾਸ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਰੀਕਲੇਮ ਮਾਈ ਸਪੇਸ ਆਫ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਰੈਪ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਧਾ ਰੈਪ, ਬੂਮ ਬੈਪ ਰੈਪ, all that, right? ਤੇ so I wanted to take it back and just do 12 songs of nothing but rap, trap rap, there's boom bap rap, there's singy song rap, Toronto rap, West Coast rap। I wanted to show that I can do it all। ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਥੋੜੀ ਅਲੱਗ ਸੀਗਾ because ਮੇਰੇ fans haven't heard it। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪਰ ਮੇਰੇ fans ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਖਤਰਨਾਕ fans ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ flows, ਤੇ I just wanted to bring that up, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲਾਈਕ ਕੀਤਾ, ਤੇ I'm just happy about that। That's great bro, क्योंकि पाजी यू नो पहले जो पंजाबी सॉन्ग आया उसमें जो यू नो तुसी रैप किया वो बहुत सही था। ये मुझे लगता है कि एक प्रॉपर जिसे हम कह सकते हैं हिप हॉप एल्बम है। Yeah, 100% it is। हाँ, तो वही जैसे यू नो आपने इतनी मेहनत करी, फीडबैक बहुत अच्छा मिल रहा है। एंड टेल मी अबाउट यू नो अदर आर्टिस्ट जिनको आपकी एल्बम बहुत ज्यादा पसंद आई, वो कौन कौन है जिन्होंने यू नो आपने उनको सुनाई, एक्सक्लूसिवली सुनाई होगी रिलीज होने से पहले, तो कौन है वो आर्टिस्ट? मैं किसी लाइक कोई ਹੁਣ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਨਫੋਰਚੂਨਟਲੀ, ਰਾਈਟ? ਯੂਜੂਅਲੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਆਹ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਆਹ ਗਾਣਾ ਦਿਖਾਤਾ। ਅਨਫੋਰਚੂਨਟਲੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਲਾਈਕ ਕੋਈ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫਸੀ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ ਐਲਬਮ, ਦ ਹੋਲ ਐਲਬਮ ਅਬਾਊਟ 2 months ਬਿਫੋਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲਾਈਕ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਯੂ ਨੋ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਐਲਬਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਦਾ, ਬਿਕਾਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਕਸਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਆਹ ਕੀ ਆਹ ਵਰਡ ਚੇਂਜ ਕਰੀ ਆਹ, ਸੋ these kind of things ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਟਸ not just for ਕਿ ਭਾਈ ਦੱਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਾ, ਇਟਸ more like what can I make better, ਹੈ ਨਾ? ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ that we trust each other and we help each other in that। ਬਾਕੀ after the album released, I was surprised to see ਕਿ ਕਿੰਨੇ like ਵੱਡੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਜਿੱਦਾਂ ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਜੈਜ਼ ਧਾਮੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਜੀ ਸਿੱਧੂ, ਦਿਲਜੀਤ ਭਾਜੀ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਟ ਕੀਤਾ, you know who else I'm trying to think, who else, Zora, Zeus, all the people that you know, or Mickey, yeah, like the people that just show love in general, they really showed love this time। mainu lagda ke it just maybe it's just that's what they wanted to hear from me and then they finally heard it। That's great bro, you know इतने सारे जितने भी बड़े आर्टिस्ट है, लेजेंड आर्टिस्ट है, खतरनाक आर्टिस्ट है, वो भी उन सबको आपकी एल्बम पसंद आई।
मुझे लगता है कि मैं अभी चेक कर रहा था, रिलीज अभी जस्ट फ्रेश रिलीज हुई है, तो मैं देख रहा था कि रिस्पॉन्स 1 वीक रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, लोग बहुत प्यार दे रहे हैं। नीचे कमेंट्स में देख रहा था, कमेंट्स भी बहुत अच्छे हैं। अब जिन लोगों ने एल्बम नहीं सुनी है उनको आप क्या बोलना चाहोगे, क्योंकि इट्स फ्रेश एल्बम, ब्रांड न्यू फ्रेश। You're missing out on the best album of 2020. Best Desi album of 2020. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿਪ ਹੌਪ ਦੇ ਫੈਨ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 뮤직 ਦੇ ਫੈਨ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ just in general music ਦੇ ਫੈਨ ਆ, this is something you should hear. ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ important ਸੀਗਾ ਕਿ for my art ਮੈਂ puzzle ਵਾਂਗੂ ਦੇਖਦਾ, and this is just another piece of the puzzle, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ 4 albums ਆ ਚੁੱਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ everything is vakra, so you can't just say that you know Fateh from one song or one album, you know what I mean? You have to listen to all of it to be like, Fateh can do all of these different things. So yeah, it's important to listen, and I think you'll like it. Yes, अभी जाके सुनो अगर आप लोगों ने नहीं सुनी है। जैसे पाजी ने बोला कि आप one of the dopest और latest album आप मिस कर रहे हो। Best album of 2020 goes without saying. Best album, yes. अच्छा, आपके माइंड में क्या था? जैसे आपने स्टार्टिंग बोला कि मुझे प्रॉपर हिप हॉप एल्बम बनानी है, सो 4 एल्बम आपकी आ चुकी है, सो व्हाट वाज ऑन योर माइंड कि भैया इस बार तो मैं जैसे मैंने बोला कि बहुत सारे फ्लो है, म्यूजिक प्रोडक्शन बहुत खतरनाक है, तो कि प्रॉपर हिप हॉप एल्बम क्या था माइंड में व्हाइल मेकिंग इट? एक वन मेन थिंग वाज एक जिदा हुन मेरे लास्ट 3 एल्बम्स आ चुके हैं, ते मेरे जेडे गाने जेडे hit hoya, I guess you can say, was the Senti stuff, right? With the like Ayat Nu Land was a bigger song than All My Own, or all the songs that main jede mein kar raha siga, te loki started even in North America jala maybe more than India, loka ne menu like they put me in a box, menu category je paata siga कि आ Senti music करदा, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਥੋੜੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਫਤਿਹ ਰੈਪ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਫਤਿਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰੈਪ ਕਰਦਾ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਲੋਕੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸੀਗੇ। then I saw the resurgence of hip hop in Mumbai and Delhi, ਤੇ to be very honest, I was being left out of the conversation. Loki menu, they were mentioning top 10 rappers of desi rappers, they weren't mentioning me, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, because I've been rapping, and I was the first Sardar Sikh rapper out of India, also Canada, also America. So it's like, for you to forget what I did was, I was upset. I'm not gonna lie. Te menu laga ke okay, menu thode na apna pen kadna pena, right back to the pad, and the lokan nu yaad karana pena ke why I'm here or why I'm in this position. I think I did exactly that. बिल्कुल, मतलब आपने सही सोचा और आपने खतरनाक एल्बम बनाई है, मैं कहूँ तो गुस्से से बनाई है एल्बम। तो प्यार नाल सारे सुन लो, गुस्से से बनाई है, प्यार नाल सारे सुन लो, प्यार नाल सारे सुन लो। सही, तो ये था आपके माइंड में। हाँ जी। लेट्स टॉक अबाउट द म्यूजिक प्रोडक्शन एंड कोलैबोरेशन। म्यूजिक प्रोडक्शन दसो कि व्हाट डू यू वांट टू नो? कितने सारे बीट प्रोड्यूसर्स ने काम करा कोलैबोरेशन से। रफ्तार भैया की कोलैबोरेशन है, वो मुझे बहुत सही लगा गाना। थैंक यू ब्रदर। बीट प्रोडक्शन, सो एक हैगा मुंडा, he's from I want to say Maryland or Washington DC, Sardar Munda hi hai, te onna mera link hoya siga, he produced 2 songs on the album, right? There's another kid from here Brampton to hi hai, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਵੇਕ ਹੈ। I don't think he even, I'm not sure, but ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗਾਣਾ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਅਚਾਨਕ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੀਟ ਭੇਜਤੀ, ਤੇ ਉਹੀ ਬੀਟ ਜਾ ਕੇ ਬਣ ਗਈ ਸਟੈਂਡ, ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਦਾ ਗਾਣਾ ਬਣ ਗਿਆ with ਨਸੀਬ। ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਬਾਕੀ just whoever I saw fit, ਮੈਨੂੰ beats ਲੋਕੀ ਭੇਜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। I might not know those producers directly, ਹਨਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਆ, then we do a deal and we make it happen। ਬਾਕੀ ਫੀਚਰ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਚੁਣ ਕੇ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਨਸੀਬ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਹਨਾ, ਤੇ ਬਿਫੋਰ ਅਸੀਂ ਗਾਣੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ anything like that, I just wanted to get to know the guy, ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ, right? Because sometimes industry 'ਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਬੰਦੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, in person 'ਚ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਸੀਬ ਦੀ vibe ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ। We got along right away, ਅਸੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਚਾਹ ਲਈ, then we ended up hanging out the whole day, ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ we talked about ਗਾਣੇ, industry stuff, all that। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜੇ senior ਨੇ, so he was asking me some questions, ਤੇ
ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਬੀਟ ਭੇਜੀ ਨਾਲੇ ਆਪਣਾ ਵਰਸ ਭੇਜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਸੋ ਹੀ knocked it out and ਉਹ ਸਟੈਂਡ ਬਣ ਗਿਆ ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਗਿਲ ਦ ਜਨਰਲ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਤੋਂ he's up and coming I would say ਹਨਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਸਟਾ ਤੇ ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ he just DM me ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੰਸਟਾ ਤੇ bro check me out ਹਨਾ I think he has like 2-3,000 followers maybe 5 and मैं क्या ठीक है I'll check him out मैंने बहुत चंगा लगा तो मैं क्या चल next time मैं California आऊँगा ना मैं ऐसी पहनने हैं so I actually went to California and we made both of those songs sitting at a dining room table in my manager's house so you know वो दो गाने हो गए ते who else is on there I know you want to get to Raftaar so I'm gonna get to that in the end Naseeb at the end yeah Naseeb the Villa मेरा friend है there's another guy named Hush वो भी इत्थों दा Toronto दा है so those two we did those songs ते end से जाके I had album done sigi oh sorry yeah so the album done sigi essentially te mere ko ek gana paya siga and I wanted to get Raftaar on the song so I know his manager and you know shout out to Ankit he's such a nice guy I messaged him I'm like bro I want to do this with Raftaar you know I've never actually spoke to Raftaar before but mere only both respect you know ek guy I know he's a good friend of mine he respects Raftaar as well so I have a lot of respect for him and main kya aa gana hai Raftaar onu gana nahi changa laga thank god o gana nahi changa laga and they're like yo send something else send something hip hop मैं क्या ठीक है hip hop में भेजना so then I went back the same day मैंने वो beat लब्बी then I was like कैसे हो भाई कितना है यार and I just started recording it and ते ओही मैं सारा record करके उसे वेले घंटे चे करके मैं क्या पता नहीं चंगा लगूगा नहीं लगूगा but I was like yo I'll try it and I sent it to him ते उन्होंने चंगा बहुत लगा Raftaar sent it to me the next day ते वो गाना like मिनटों मिनट चे हो गया ते I'm very happy that it happened क्योंकि I didn't to be honest I don't think a lot of people knew what a Raftaar and Fateh song would sound like but I think it sounds pretty good right it sounds G-fad there you go there you go ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੈ ਦੋ ਹੋਰ ਮੁੰਡੇ ਆ Mafioso the Straight Bank ਮੈਂ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ I wanted to do something boom bap so you know the freshman cypher BET ਦੇ ਸਾਰੇ cyphers ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ not BET sorry double XL ਦੇ freshman cypher ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੁਛ ਏਦਾਂ cypher ਵਾਂਗੂ ਕਰਦੇ ਆ hip hop right old school hip hop boom bap ਤੇ Straight Bank ਹੈਗਾ New York ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡਾ go check him out amazing very very talented artist all jada boom bap karda mixed Punjabi and English like I do kills it Mafioso California to same thing mixed Punjabi and English mega tinna da gana karde hain Toronto to New York to Cali connect oda cypher karde hain that was the last song I recorded for the album te you know bahut vadiya gaya so that's that why I asked this question because aapki album jo hai na bahut rich hai you know in terms of collaboration in terms of beat producer इसमें बहुत वैरायटी है और इतने सारे लोगों ने मिलके ये एल्बम को बनाया है yeah 100% it's one of the best album oh thank you so much man इसके अलावा I want to ask you know 5 साल हो गए पाजी तुसी इंडिया नहीं आए when are you coming to India bro पता नहीं क्यों नहीं हो रहा I don't know ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ if I'm being very honest the reason I haven't come to India is because I think people or the promoters don't believe that I have a lot of fans in India and I have all my mere Spotify te sare mere India to from Bangalore to Pune to Mumbai to Delhi to Punjab to Lahore like there's so many fans out there so for some reason for one another kuch ho nahi reha but then I also think that like jo rab karda theek hi karda te koi wajah hai ki jadon main aaunga na it'll be a bigger impact every year I've tried हर साल मैं ट्राई किया कि मैं you know कुछ आवा कुछ प्लान करिए because I don't want to just come there and not do a show or not do something है ना कि कुछ होवे क्योंकि fans को भी लगे कि आया तो you know कुछ करके गया so that's why वो planning चे कुछ होया नहीं पर hopefully हुन COVID तो बाद असी आइए ते we perform this album and all the other albums that I have definitely पाजी next year 2021 में सिचुएशन ठीक होती है तो मतलब definitely इंडिया आओ यहाँ शो करो मतलब I would love to come to see you मेरा जी वो करता to be honest like I've been to Mumbai I've been to Delhi I've been to Chandigarh I've been all around Punjab I love it there मैंने you know बहुत चंगा लगता 2021 में कुछ सीन बनाते हैं इंडिया में फतेह भाई के साथ yeah जरूर let's do it अच्छा पाजी मुझे ये बताओ कि रैप आपकी लाइफ में आया कैसे क्योंकि आप पूरे दुनिया घूमे हुए बंदे हो आप पैदा बैंकॉक में हुए स्कूलिंग आपकी कैलिफोर्निया देन
कनाडा टोरंटो, तो हाँ, तो रैप आपकी लाइफ में आया कैसे होटल में? रैप मेरी लाइफ 'ਚ बहुत ਛੇਤੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਗਰੋ ਅਪ ਹੋਇਆ ਸੀ ਗ੍ਰੇਡ 1 ਮੈਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਹਨਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਯੂ نو ਦੇਰਸ ਮੋਰ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਪਲ ਇਨ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਬਟ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ there was very little representation hana te being the only kid in all my whole school jehda Indian siga te ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ you know jehda ਪੱਗ ਬੰਨਦਾ ਸੀਗਾ the only kid from grade 1 to grade I would say grade 10 ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜੇ ਹੋਰ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ like I had to find a way to be like everybody else even though I didn't look like everybody else ਤੇ ਇੱਕ way that I found because ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ like ਜਦੋਂ ਗੋਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ it was more mixed right so Mexicans Puerto Ricans ਕਾਲੇ or African Americans ਏਦਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ so it was a big mixed community but one thing that brought everybody together no matter who you were hip hop right hip hop 90s ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ like it was full fledged ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ like ਪੂਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਹਨਾ ਤੇ hip hop ਦੇ ਥਰੂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਧੀਆ ਸੀਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ you know pretty much brought up in California ਮੇਰੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਧੀਆ ਸੀ so hip hop ਦੇ ਥਰੂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਫੈਮਿਲੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਹਨਾ ਰਾਗਿੰਦਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੋਵੇ everybody loves music so naturally ਮੈਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਾ you know ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਾ ਝਾਸ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਹਿਪ ਹੌਪ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਟੂਪਾਕ ਜਦੋਂ ਹਾਲੇ ਟੂਪਾਕ ਜਿੰਦਾ ਸੀਗਾ you know ਬਿਗੀ ਰਫ ਰਾਈਡਰਸ Jay-Z ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਦੋਵੀਂ ਸੈਕੰਡ ਥਰਡ ਗ੍ਰੇਡ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੌਣ ਹੈ ਹਨਾ ਤੇ I think ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ friends ਵੀ you know we made friends we did that hip hop lifestyle ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ I know I'm just making it very long but lifestyle ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕੱਪੜੇ you know ਜਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ slang everything became a lifestyle so naturally when I started to write poetry or when I wanted to record hip hop was the first thing you could freestyle ਤਾਂ ਅਸੀਂ lunch ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ just ਉਦਾਂ ਹੀ right lunch time or after school freestyle ਕਰਨਾ boom ਜੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ you know like we're doing in India like we're just straight freestyle on the street like we did that when we were younger हाँ वही क्योंकि जितना बोल लाइफस्टाइल क्योंकि मुझे याद है मैंने आपके पुराने वीडियोस भी देखे हुए हैं तो उसमें पूरा लाइफस्टाइल आपका वही था you know you are living hip hop एक मुझे गाना भी याद आ गया YouTube haters करके yeah my first song ever that I released publicly yeah हाँ अच्छा you know रैप करने के बाद आप कर रहे थे you know परफॉर्म कर रहे थे हर जगह ज़्यूस पाजी आपको मिले उसके बाद एकदम से ब्लास्ट वो क्या स्टोरी है स्टोरी की है ਉਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ YouTube ਤੇ ਦੇਖਿਆ right I was the YouTube haters ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸੀਗਾ ਮੈਂ locally ਆਪਣਾ like what I tell artists is you have to do everything yourself until you get to the point where somebody does it for you a luxury to get somebody else to make your videos for you to make your own beat everything you have to do yourself so mere and I know a lot of artists watch you so this is why it's important for me to say that ਹਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੀਗਾ ਕਿ like okay ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ support ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ right community ਦੇ ਵਿੱਚ Toronto ਦੇ ਵਿੱਚ it's very heavily populated with the Sikh Punjabi community diaspora ਹਨਾ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕੋਈ rapper ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ that was Sikh Punjabi Honey Singh wasn't around either right at that time or he maybe had just started so what happened was ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਰਦਾ ਸੀ YouTube ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਘਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਗਾਣਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ YouTube ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ ਫੜਾਣਾ ਕੈਮਰਾ ਆ ਫੜ ਲੈਟਸ ਡੂ ਇਟ ਰਿਕਾਰਡ ਇਟ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਐਡਿਟ ਕਰਕੇ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਔਨ YouTube ਐਦਾਂ ਆ ਗ੍ਰਾਈਂਡ ਸੀਗੀ ਹਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜ਼ੂਸ ਕਰ ਹੋਲਡ saw some of the videos ਜੋ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਬੀ a little bit outside of it ਲੋਕੀ ਜਾਣਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਫਤਿਹ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ ਰੈਪ ਕਰਦਾ ਹਨਾ ਤੇ ਜ਼ੂਸ saw it ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਹਿੰਦਾ bro ਤੁਹਾਡਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਕੰਮ ਹਨਾ ਤੇ can you do ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਕਰੀਏ bro ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ like to be honest ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੈਰਾਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜ਼ੂਸ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਲੱਗਾ ਮੈਂ like you know since I was what is it like 6ਵੀਂ 7ਵੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ when ਲੈਂਬਰ ਤੇ ਜ਼ੂਸ ਸੀਗੇ right ਜਦੋਂ ਉਹ they were killing ਮੈਂ bro ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ੂਸ ਦਾ ਫੈਨ ਸੀਗਾ ਲੈਂਬਰ ਦਾ ਫੈਨ ਸੀਗਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਲੈਂਬਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਨਵੀਂ ਐਲਬਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨਾ like it's just like a big thing for me ਤੇ ਮੈਨੂੰ believe ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜ਼ੂਸ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਏਦਾਂ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫੋਨ ਕਰੂਗਾ bro ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰਾਜ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦੂੰਗਾ ਮੈਂ ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਮੈਂ you know what I mean it never happens so Zeus now finally actually called me ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ okay yeah bro Khan done ਕਰ
he said मैं गाना भेज रहा मैनू करके दे 2-3 वर्स करके दे दे bro तुम believe ना करोगे ते Zeus भी कहंदा literally 3 hours later मैं उन्हें text किया bro मैं गाना भेजता already 3 verses I got it done right then and there उससे बाद phone कट्टिया I went straight to the studio started recording it sent it back उन्होंने ना because he works fast he works like moment है वधिया है let's get it done ते उन्होंने ना वधिया लगा कि I kind of work in the same pace क्योंकि मैं इतने देर दी तैयारी कर रहा सीगा I've been doing you know mixtapes and shit for so long ते he liked it so much he's like wow man that's crazy उस तो बाद वो गाना आया it's called Juain Diya Haran by Madan Maddi and Dr. Zeus and Fateh it's the first song it's still on YouTube very little views but वो गाने ने TV ते पाता मैनू right off the bat off of one phone call I'm on the TV now I'm like okay you know मैनू दिसन लग पिया कि इस कुछ हैगा like कुछ कर सकते हैं ना Zeus दा फिर 2-3 महीने फोन नहीं आया maybe 5-6 months उस तो बाद मैनू फोन आ गया like Fateh I'm doing a lot of projects I don't know की होना जे तू तैयार है I'm gonna start sending you all these songs that तू चक दे बस अखा मीट के बस just record it and do it I'm gonna send you songs and I need it done quick मैं के bro no problem ते पहला मैनू एक्साइटमेंट सीगी है ना कि like oh man Amrinder Gill दा thing or Jazzy B just इतनी एक्साइटमेंट होंदी है but then it got so much to the point like oh and like मैनू I remember Bilal Sahi दी album सीगी he was finishing it 8 गाने सीगे I think he sent me 4 songs उन्होंने विचों 3 release हो गए एक नहीं होया that's fine there was another one it was like so many songs we were just doing over like he was just sending it to me done sending it back every weekend नाले मैं स्कूल भी सीगा नाले मैं जॉब भी करदा सीगा so ऐदा होया ते that's when Black Suit came out, Pendu came out, Inch came out, all those songs came out there. Yeah, man, that's kind of how it happened. बहुत छेती होया ते पता नहीं लगा कदों होया, to be honest. और you know, बहुत सही चीज भी हुई क्योंकि एक वो जो ट्रस्ट है ना, you know, जूस पाजी आपको भेजा रहा है कि फतेह तू रेडी है जैसा you said, फतेह तू रेडी है करना है, and आप back to back भर के वो ना वापस भेज रहे हो कि हाँ ये हो गया, तो एक वो ट्रस्ट भी बहुत जरूरी है, तभी वो चीज इतनी बड़ी बनती है, और तभी वो सारे गाने आज सुपर हिट है. Yeah, and ਤੁਸੀਂ believe नहीं करना मैं Zeus ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ 2 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਬਸ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਆ ਗਾਣਾ ਭੇਜਦਾ ਆ ਗਾਣਾ ਭੇਜਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ Zeus ਕਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਕਿਦਾਂ ਲੱਗਦਾ properly right in person ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ finally I got to go to UK and then I met him. That's great. अच्छा पाजी मेरे को ये बताओ कि इतना काम करा आपने and you know आप कनाडा में सारा काम कर रहे थे आप मुझे ये बताओ कि हसल कितना करा आपने What's your hustle story? बहुत ज्यादा ते हाले भी मैं कर रहा हाले भी I look at जो मैं आज भी कर रहे हैं it's just a hustle हाले भी मैं grind कर रहे हैं I don't think मैं जिथे तक मैं पहुंचना चाहना मैं हाले तक उत्थे है नहीं गा ते हाले भी पूरी hustle है पूरी grind है if people think that it's gonna get easier when you get I guess to my level or when you get on it actually is gonna get harder because it's to maintain it you know what I mean hit होना एक बारी बहुत सौखी गल है so many people do it and so many people leave but to maintain it is the hard part and the hustle is it really started now when ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪੈਰ everything is here ਤੇ cement ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਰਹਿਣਾ and to keep moving forward is the hustle I would say but ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ hustle I would say Zeus ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ easily 10 साल easily Zeus ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ अभी भी मतलब Zeus पाजी ने बहुत हेल्प करी और अभी भी हसल चल रही है जैसे और वो चलती रहेगी you know चलती रहेगी क्योंकि वो मेंटेन करना जैसा आपने बोला कि वो मेंटेन करना ही सबसे बड़ा टास्क है मुझे ऐसा लगता है या वही सबसे बड़ी हसल है 100% दैट पोजीशन yep अच्छा पाजी आप पंजाबी में भी you know खतरनाक रैप करते हो इंग्लिश में भी और आप पूरा भारी रहे हो तो मतलब इंग्लिश में भी आप जब करते हो तो मतलब अलग ही स्वैग आता है जो सब देखते हैं you know who's this guy यार कौन है भाई इतना खतरनाक रैप कर रहा है ठीक है तो पंजाबी आपने मतलब चूज क्यों करी मतलब आपको करनी थी पंजाब में या इंग्लिश आपने चूज करी इंग्लिश में मैं कीता ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ 2-3 ਮਿਕਸਟੇਪਸ ਮੈਂ ਕੀਤੇ Zeus ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਦੋਂ Zeus ਨਾਲ ਸੀਗਾ 2 ਪੰਜਾਬੀ ਸਟਾਈਲ ਸੀਗੇ right there was 2 styles of Punjabi rap and you know one was gangster and then Honey Singh right ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ I don't and naturally when that's all you hear you're going to start sounding like one of those 2 people so I was like मैं करना नहीं चाहता Zeus ने बहुत दोष लाया like I'm telling you for like at least a year नहीं पूरा मैं कदी कर दिंदा ਸੀਗਾ 1 लाइन 2 लाइन ये bro तेरी पंजाबी ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਆ तू क्यों नहीं करता you can write in Punjabi bro मैनू करना नहीं you know excuses बहाने बड़ाना bro मैनू लिखना नहीं आउंदा मैनू पता नहीं मेरी पंजाबी इन्नी वधिया नहीं की he said bro करके तो देख
ਪਹਿਲਾ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ the first ever song that ਮੈਂ ਪੂਰਾ verse ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਸਿਕੰਦਰ ਕਾਲੋਂ ਦੇ ਨਾਲ overtake I know you know that song I know you know that song ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ friends ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ nah bro ਠੀਕ ਹੈ yo Sikandar washed you on that right and he did and he you know he killed you on that ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ so ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਹੌਸਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਸੀ I was like no obviously ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ yeah what are you gonna say but ਭਾਜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਵਰਸਾ गले में चुमा ले सुने बबू बांध दे गाने मेरे फैंस मैनू पहचाने वो बहुत सही था I know yeah oh shit मैनू आपने नहीं याद तेनू कितना याद है that's crazy okay go on yeah मैं उस टाइम पे बहुत सुनता था मुझे याद है आपने अपना वीडियो भी शूट करके अलग से भेजा था Yeah. You know, the thing is कि मेरे friends know again Punjabi rap ਇੰਨਾ new ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਕਿ they're like ਉਹ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਥੋੜੇ it takes used to get listening to ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ I was like ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਗਾ obviously right like my part I'm not talking about Sikandar I'm just talking about my part ਪਰ ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Zeus heard it ਕਹਿੰਦਾ bro why can't you do this on my song ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ bro ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ I'll try it right ਬਾਕੀ I was like I just put it on him ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ try ਕਰ ਲੈਣਾ ਬਾਅਦ ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਹਨਾ like yo people say ਕਿ ਆ ਕੀ ਪਾਤਾ ਗਾਣੇ ਤੇ that's yours cause I know cause ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਉਦਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਨਹੀਂ it's not as strong right ਤੇ Zeus ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਭੇਜਿਆ ਗਾਣਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ and ਉਹ ਮੈਂ ਕੀਤਾ that was the first time ਕਿ ਮੈਂ Zeus ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚ and you know ਗਾਣਾ ਹਿੱਟ ਹੋ ਗਿਆ just then I was like oh ਨਾ ਮੇਰੀ confidence ਵੱਧ ਗਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ then if I could do it once I could do it again and I have been तो ऐसे स्टार्ट हो और इंग्लिश भी आप अभी भी करते हो मतलब अभी एल्बम में भी था मतलब मिक्स दोनों रहता है English yeah so like now मैं कोशिश कर रहे हैं कि कल्ला जे पंजाबी करना पूरा पंजाबी करना जे English करना पूरा English करना obviously mix तो ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਰਹੂਗਾ because that's my strong suit right ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ English ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ I can switch right back and forth the same thing I can do in rap ਉਹ ਤਾਂ ਰਹੂਗਾ but I want to concentrate on just English songs and just Punjabi songs as well but ਤੁਸੀਂ ज़्यादा comfortable किस में हो in पंजाबी और in English जो आप बहुत easily कर देते हो जैसे Zeus पाजी ने गाना भेजा और यहाँ से 3 घंटे में पंजाबी में चला गया पंजाबी bro गाने ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੁੰਦਾ and the topic ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਸੈਂਟੀ album ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਮੈਨੂੰ I can't say it in ਪੰਜਾਬੀ ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ vocabulary ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ to be able to express myself as deep as I did so ਮੇਰੀ vocabulary obviously English ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਆ so ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ I can do it in English better so ਉਸ type of ਗਾਣੇ ਚ ਹਾਂ English goes ਪਰ ਜੇ fun ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ and you know just whatever like yeah I could do Punjabi too it to me is the same now which is good yeah that's great अच्छा पाजी tell me your bromance with Prophecy क्योंकि मैंने उनको इंटरव्यू किया था और मैंने उनसे पूछा था जिन कुछ आर्टिस्ट के मैंने नाम लिए थे उनमें से आप भी थे तो उन्होंने बहुत अच्छा बोला आपके बारे में आप मुझे बताओ योर रोमांस विद प्रोफेसी भाई bromance with Prophecy भाई I think that ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਕੀਆਂ ਸਾਡੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਆ because ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ we're relatively starting ਚ ਸੀਗਾ ਹਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੋਏ the most important thing was ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਫੈਨ ਸੀਗੇ so he liked what I did ਤੇ I liked what he did ਪਰ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ like ਅੱਗੇ or ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ like as friends we connected as genuine friends the Prophecy's he's like a quiet guy and doesn't have a lot of friends and stuff like that so the fact that ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ like very easily ਜਿੱਦਾਂ like ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ just connected ਹਨਾ ਤੇ yeah man I think that was the most important part because like you have friends in the industry as much as you want but like Prophecy now I can call him anytime I want and we can talk about either music or we could talk about girls or we could talk about zindagi ch ki ho reha family na ki ho reha like you know what I mean a personal relationship ja ban gaya as actual friends and there's not many people you could do that with in the industry so that is that and then on top of that ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗਾਣੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਕ ਕੀਤੇ ਆ right from fame to ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ to rumors to on my own ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲਾਈਕ ਕੀਤਾ so ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਣ ਗਈ ਗੱਲ ਤੇ personal life ਚ ਵੀ ਬਣ ਗਈ ਗੱਲ ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਹੈ ਮਤਲਬ he is your homie he's my friend yeah he's my homie ਅੱਛਾ ਭਾਜੀ
आप एक सिख रैपर हो, सो वहां पर कनाडा में जब आप जाते हो वहां परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि आप दोनों लैंग्वेज में रैप करते हो, पंजाबी और इंग्लिश में, सो व्हेन पीपल सी यू परफॉर्मिंग कि एंड तो क्या रिस्पॉन्स है एज अ सिख रैपर, क्योंकि आप हर जगह खतरनाक काम कर रहे हो, आपका काम खतरनाक है, बट द सरप्राइज surprise तो ਹੁੰਦੇ ਆ 100%, and sometimes ਜਦੋਂ ਮੈਂ perform ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ maybe just ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ swag ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦਾ, और पता it कुछ हैगा. And when we're saying Ononu, you're talking about people that are not Punjabi, not Indian, and they're like, okay, yeah. So I think only the like they understand it. Obviously, one of the culture, hip hop, and all that stuff, so they understand it. But then they also respect it. Like I remember ek bari main New York ch perform kar raha siga BB King's. It's a pretty big venue. Otte sare aande right? Sare aande when I was leaving, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ security guards ਕਾਲੇ ਵੱਡੇ ਕਾਲੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੇ ਕਾਲੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ yo you're sick, you killed it. ਤੇ ਮੈਨੂੰ I was like ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ. I was doing it all in hip hop, but ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ swag hip hop ਹੈ, because I grew up listening to hip hop. I went to every hip hop show ਜਿਹੜਾ ਟੋਰਾਂਟੋ 'ਚ ਆਇਆ. ਮੈਨੂੰ I do exactly what hip hop is. They understand it and they like it and they respect it. Another thing is I think people become more accepting of Sikh or Punjabi or Indian rappers because or just I guess personalities, because kinne aa chuke hain like that are in the front, right? You got Humble the Poet, you got Jagmeet, you got myself, you have Just Rain. So many people that appeal to more than just Punjabi people. They appeal to the world. So Loki are more accepting of it. That's great, man. मतलब ऐसे ही खतरनाक तरीके से पूरा वर्ल्ड वाइड मचाते रहो. Exactly. Thank you, brother. I will. मेरे को पाजी कनाडा के हिप हॉप सीन के बारे में जानना है. वहां पर क्या है सीन, अभी क्या सीन है, मतलब कौन सबसे लेटेस्ट, देसी, बाकी तो पता ही है देसी में कौन सबसे ज्यादा, आप तो हो ही, उसके अलावा देसी चे like rap, hip hop? Yeah. Desi che jehda main janta, I think Naseeb is doing a great job. He's Vancouver to and he's doing a great job. Baki Sunny Malton, the Big Bird, you know what I mean? Sunny Malton's a great rapper in English and Punjabi as well. The Big Bird producer che Baki there's a lot of nave aa rahe. I don't know too many personally, or I don't really listen to too many, but do jehde hege I listen to that I really like. So ye log hain jo abhi सीन बना के रखा हुआ है. Yeah, I would say so. इतने बना रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं for sure. Yeah. अच्छा, और आपके फेवरेट देसी रैप आर्टिस्ट कौन से हैं? All over the world. मेरे फेवरेट हैगे I loved Honey Singh. Or I love his work of what he did, and the reason why is because Honey Singh ने rap nu mainstream करता, right? ते बहुत लोगों ने हनी सिंह तो पहला रैप ਨੂੰ बस एक ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, only they can do it, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ. When he brought it to mainstream, whether local people like it or not, or ਤੁਸੀਂ debate ਕਰ ਸਕਦੇ rap ਹੈ ਨਹੀਂ rap, whatever it is, the fact that he made it mainstream, he made it possible for all of us to end up being mainstream as well. Anybody else who's now coming up in the scene. So I have to give my respect to Honey, and I listen to his albums and stuff like that, and they're great. I like him. I like Divine. I like Raftar a lot. I like Sikandar Kano. I think Sikandar Kano is doing his thing. Pam Ramgadia, go check him out. I think he's one of the most talented. Oh yeah, I think he's one of the most talented people ever. And I think Enni Vakri, like he's so years ahead कि लोगों को समझ नहीं आ रहा कि कर की रहा है, because 2025 च रह रहा है, इस वेले हैगा या ते लोग की हाले 2019 दे विच है. So he's great. Who else did I really like? Everybody that's on my album, Straight Bank, Mafioso, ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ obviously ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, you know what I mean? That's why I'm working with him. I really like Slim Swagger, Deep Dollars. Yeah, man, I think that's pretty much it. These are the people that I listen to, that like menu, yeah, I actually listen to, and I'm like, okay, yeah, I mess with these guys. तो खतरनाक आर्टिस्ट को सुनते हो? Of course. खतरनाक आर्टिस्ट सुन के और फिर ही खतरनाक बनना है ना. हाँ वही, अच्छा सुनोगे तभी अच्छा बनाओगे.
Exactly. अच्छा पाजी, ड्रीम कोलैबोरेशन आपका किस आर्टिस्ट के साथ है? एक होता है कि आर्टिस्ट के मन में कि यार मेरा ड्रीम कोलैबोरेशन इस आर्टिस्ट के साथ है, अगर फ्यूचर में कभी जिंदगी में कभी ना कभी करना ही करना है, वो कौन सा आर्टिस्ट है? किथे like in India or anywhere else? Both. In India and outside. India ch my dream collab is Fateh and Diljit. Oh. Yeah. Te hoga. Mark my words, it'll happen. And then a dream collab. Oh, I also listen to Ikka. I forgot to shout out Ikka. I listen to Ikka as well. Sorry about that. The dream collab in for America. I don't know, man. America dream collab. One of my dream collabs with American artists already happened. मैं कह नहीं सकता क्योंकि मैंने ये नहीं पता हम कदों होगा, but it already happened. It happened this year. ते मैं बहुत धन्यवादी हां. I've been a fan of this artist forever. ते मेरे friends do पता कि कितना how excited I was. गाना done है, everything's done, just waiting for the paperwork and everything to go through. ते ओ आऊगा and you'll know exactly who it is when it comes out. So एक हो चुका ते I think the dream collab I would say would be with Drake. Even if I'm just helping him write, I would be happy with that. Yeah. मैं क्या पंजाबी च जे ड्रेक ने कुछ पंजाबी च लिखना होवे तो मैं हेल्प कर दूंगा, no problem. समझ गया. सही है. And rap artist in both? हाँ, in both. Same. Both, yeah. Rap artists, like rap. Who would I really want to work with as rap that I listen to? I like Tory Lanez a lot. So Tory Lanez, America, Canada. And then from India, I would say rap artist would be Divine. I want to hear what a Fateh and Divine record sounds like. कुछ गलत और जबरदस्ती बनेगा मुझे लग रहा है अगर कोलैब होगा. डेफिनेटली. एंड होना भी चाहिए. Oh, of course. होना भी चाहिए. I think so. Yeah. So जितने भी फैंस देख रहे हैं जाके डीएम कर दे अपने फेवरेट आर्टिस्ट को. Yeah, a lot of times fans ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰ. I'm like, you tell them. I'm the one who works with everybody. ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੈਟਲੌਗ ਦੇਖ ਲਓ. ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ. ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ. Obviously, right? Like ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗਾ. Work with them. That's great, bro. मतलब फ्यूचर में हम जरूर देखने चाहेंगे फतेह एंड डिवाइन. Yes, 100%. ठीक है. अच्छा भाई, आपने बहुत सारे खतरनाक और मेरे तो बहुत मोस्टली फेवरेट है सिंगर्स, पंजाबी सिंगर्स, उनके साथ आपने काम करा. तो आप मुझे बताओ आपका सुपर फेवरेट कौन है एंड उसके साथ काम करके आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? इतना टाइम हो गया. I know लिस्ट बहुत लंबी है. Yeah, लिस्ट बहुत ज्यादा लंबी है ते इतना टाइम हो गया कीते नु, है ना. मैं तो सेम जिस समय हुनी करके हटिया एक गाना. It's called Proud to be Desi. ਮੈਨੂੰ ਤਰਸੇਮ ਜੱਸਰ, I really liked him. ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਈਬ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ. ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਗਾਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ. So that was good. ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕਿ like in India we can do it professionally, we can have contracts, we can have these conversations and everything, it's not like just too much paji and not enough business. So it was a good balance. I like that. Baki I met Gippy Garewal very early, like literally कोई गाना नहीं आया सीगा बर्मिंघम च मैंने सीगे ते उन्होंने इन्ना प्यार दिता मैनू for no reason. He had no idea who I was. ते उन्होंने इन्ना प्यार दिता. He had me like पूरे शो दे विच we're just walking around together. ते I really liked that. You know what I mean? Like he didn't need to. मैं आज तक भी मैं कहना कि he never needed to. मैनू इन्ना प्यार दिखाने दी लोड़ ही नहीं सीगी ते जिन्ना उन्होंने प्यार दिता मैनू बहुत वधिया लगा. I think that he's such a big artist. Work with, and I think the same with Moose. Like I've hung out with Moose, Sidhu Moosewala so many times, and he's just a great guy to be around. Inspirational bandaya. I was in the studio with him just to watch him record. You're like, all right, it's sense mandi hai kyun eh banda hega jithe hega, because he's freaking talented as heck. Yeah, I would say that those, and then yeah, that's it. I would say so. Awesome, bro. Awesome. अच्छा पाजी, मैंने एक Instagram पे पिक्चर देखी थी आपकी. आप बहुत यंग थे with the legendary Jazzy B, पाजी. Yes. Jazzy, I forgot to say Jazzy too. Yeah, Jazzy, yeah. हाँ, तो उस पिक्चर की स्टोरी क्या है? जो मैं छोटा ही सीगा, जो ना छोटा मैं सीगा 15-16 साल का.
a teenager ਸੀਗਾ ਜੈਜ਼ੀ ਦਾ ਮੈਂ ਫੈਨ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ I'm talking ਕੁੱਗੀਆਂ ਦਾ ਜੋੜਾ ਲੰਡਨ ਪਟੋਲਾ like you know what I mean ਮੇਰੇ ਜੋ ਵੀ obviously ਜੋ ਆਪਣੇ parents ਸੁਣਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨਾ and then obviously I became a fan of Jazzy right ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ Jazzy was the Punjabi superstar that you want to be like, you know what I mean? And I think he was the first, like, wow, this guy's a superstar. He carried himself like a superstar. He had the big khanda chain with the diamonds. Avi inspiration ortho liya, right? So he had it all, right? He had the hair, everything. So he was from Surrey, but he was very Punjabi. It just was a beautiful mix. The Jazzy Paji da obviously ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ fan ਸੀਗਾ California ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ Bay Area ਦੇ ਵਿੱਚ he would come once every 2-3 years maybe ਉਸ time ਤੇ ਹਨਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ he did like a mela and he was like a pretty big mela ਤੇ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੇ he spent a lot of money for me to go to this VIP dinner with Jazzy B. But there was a lot of people there. ਉੱਥੇ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ 200 ਬੰਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ it was like a banquet so show ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਤ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ whatever it was a banquet ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਖਾਣਾ ਖੂਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ it was just like have dinner with or maybe it was but it was have dinner with Jazzy B. Jazzy came in for maybe 30 minutes he took pictures and he left right that was the picture so Jazzy nu milya I didn't say anything obviously I was shook and I just stood next to Jazzy he put his arm around me we took a picture the ohi photo then you know it's so interesting because Otobad me and Jazzy have done 2 public songs but a lot more behind the scenes I've met Jazzy so many times और मैंने इन्ना प्यार देता and he's like oh मैं मैंने photo याद है San Jose हुई सी I was like yeah he was like you know what I mean बहुत struggle हुआ when we saw that picture because like obviously उन्होंने भी हैगा कि like Fateh he was a fan I'm genuinely a fan of you and now I get to work with you I'm very thankful to that I get to do that so you know he found that respectable as well awesome man मतलब वही मैंने I saw that picture on Instagram मैं बोला यार जब कभी भी इंटरव्यू करूंगा तो मतलब वो जरूर मैं स्टोरी पूछूंगा कि क्या स्टोरी थी Yeah, that was the story, man. You know, shout out to my dad because and supportive sige unhone pata si ke Fateh, you know, we like him and all that te Fateh ne milna ya. And I didn't ask. I never said main Jazzy nu milna. He's like tu aaj banquet di photo hai utte photo karani hai you know what I mean like he just knew. So it was good. I'm glad that happened. Uncle ji ne future dekha tha ki future mein kuch hoga. I think Daddy knew Vishal Siga. I just found a picture of me with Sukhwinder, the Chaiya. Yes, Sukhwinder Singh. Sukhwinder Singh. Yeah, when I'm talking when I was very young, like 3rd grade, like Judah, 4 feet tall, and Sukhwinder's holding me this, and it was funny because ਜਦੋਂ ਮੈਂ Mumbai Siga couple ਦੇ ਨਾਲ, we were with Sukhwinder the whole night. It's so funny. I totally forgot that I had met him when I was a kid. Oh. So you know, Daddy knew भी शौक सीगा. That's great. पाजी मैं बोल रहा हूँ सारी फोटो निकाल लो बचपन की. मैं कर दूंगा कोई ना. अब वो सारे रियल होने वाली चीजें मतलब. Yeah, 100% रियल होने की हैं जरूर. सुखी पाजी का रियल हो गया, जैसी भी का भी पाजी का रियल हो गया मतलब और पिक्चर्स मेरे ख्याल से आपको निकालनी चाहिए. Yeah, 100%. सही. अच्छा अपने फैंस को आप क्या मैसेज देना चाहोगे जो आपको इतना प्यार करते हैं, इतना सपोर्ट करते हैं? Just thank you. ਹਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਫੈਨਸ ਹੈਗੇ ਭਾਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਹੋਣ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਲਾਈਕ ਆਮ ਨਾਟ ਦ ਬਿਗੇਸਟ ਆਰਟਿਸਟ ਯੈਟ ਬਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਮੈਂ genuinely ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੈਂਕ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ and I always remember that because ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ not because you didn't want to be but because ਮੇਰੀ ਹਾਲੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ and I thank you guys and I appreciate it. That's good. एंड थैंक्स अलॉट पाजी कि यू नो आप मेरे शो पर आए मुझे बहुत अच्छा लगा आई नो हम कब से यू नो बात कर रहे थे कि शो की इंटरव्यू करेंगे प्लान में हमारा यही था कि आप इंडिया आओ तो हम आमने सामने बैठ के लाइव एंड एक्सक्लूसिव करेंगे ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਆਉਂਗਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ we'll do another one then we'll talk about India we'll do a walking tour you can show me around. That's great bro and thanks a lot कि आप मेरे शो पर आए मुझे बहुत अच्छा लगा and I love your music you know and I support you know. Thank you so much. And Matt, the interviews we both, I love them. I watch a lot of them. I'm very happy to see how far you've come and all the things you're doing. I think to see Jo Tusi Kar Rahe Hain, it's very different because you are the pioneers of like doing hip hop interviews because you understand the culture and then you're not just asking me, so what do your parents think about, you know what I mean? Like you understand hip hop and we need more people like you and thank you for being who you are. Thank you, Padi. Thanks a lot, man. And 2021 में हम जरूर कुछ ना कुछ करेंगे. 100%. Thank you, man. Thank you, bro.